A very good afternoon. A very good afternoon and warm welcome to the respected dignitaries, participants from different states, Maharashtra, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Odisha, and different other parts. Colleagues from college and affiliated colleges. We are very glad to inform you that we are organizing this webinar in collaboration with Department of Economics, University of Allahabad. On behalf of Department of Economics, Arya Mahila PG College, I welcome you all from the core of my heart in this one-day webinar on Agriculture Crisis and Farm Bill 2020. The chief guest of this webinar is Professor Rajendra P. Mamgain from National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad. We welcome you, sir. And the keynote speaker of this webinar is Professor Manmohan Krishna from the Department of Economics, University of Allahabad. We welcome you, sir. We truly believe that all the session which will be held here will be full of knowledge and learning for all of us. So now it's time to welcome guests. I invite our principal, Professor Rachna Dubey, for welcome address. Over to Principal Professor Rachna Dubey, ma'am. Hello, thank you, Annapurna. I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you for inviting me to render my welcome address in this one-day national webinar. It gives me immense pleasure today that the organizing team has scheduled a plan to organize this webinar, one-day national webinar on the topic Agriculture Crisis and Farm Bill 2020, which is a very hot topic in this and the need of the hour also in this period, because everywhere everywhere we see, even when we start the TV news channel, किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पेपर में भी यही देखो कि गवर्नमेंट ने ये कहा वो कहा. Means every time the discussion it goes around this only, agriculture crisis and farm bill 2020. So I think so this was really the need of the hour to decide a webinar on this topic. I think so keynote speaker as well as the chief guest of this session will throw a light on this and will enlighten all the participants on this topic. So I have been given the task of welcoming all the guests of today's session. So first of all, I would like to welcome the chief guest of this session, Professor Rajendra P. Mamgain. Has a speaker now, has Annapurna has said that he is a professor of Professor S.R. Shankaran Chair, Rural Labor, and from National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad. Sir, on behalf of the core team, organizing team, behalf of the participants, behalf of the college, and on behalf of the Allahabad University Economics Department, it gives me immense pleasure in welcoming you, sir. Once again, I welcome you. And our keynote speaker is Professor Manmohan Krishnan, Department of Economics, University of Allahabad, with whose initiative we were able to collaborate this one-day webinar with Allahabad University Economics Department. Welcome you also, sir. Sir, दिख नहीं रहे लेकिन कहाँ है? Sir join कर चुके हैं? Yes, sir. Sir has joined. Yes, sir. Sir has joined. सर ने ज्वाइन किया. Yes, सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वन डे इंटरनेशनल नेशनल वेबिनार में. सर, अभी ऐसा हो गया है सर, आर्य महिला में लगता ही नहीं कोई इकोनॉमिक्स में या कोई दूसरे भी विषय में अगर कोई टॉपिक पे हम लोग अगर कोई वेबिनार करते हैं या सेमिनार करते हैं तो आपके बिना वो अधूरा रह जाता है सर. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका एक तरफ से धन्यवाद भी मैं दूंगी क्योंकि आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग का इनविटेशन विदाउट एनी हेजिटेशन और समय देते हैं. इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत भी करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ.
sir. Or on behalf of my management, behalf of my participants, my organizing team, and my college, and behalf of myself, I welcome you, sir, once again. And we have we have participants from our college as well as from Allahabad University also. We have and we have participants from other state also. I give my warm welcome to all the participants here. I also welcome my Dr. Shashikant Dikshit, the manager of our college. Sir, I welcome you, sir. Sir, actually, मैं सबको कहना चाहूंगी सर इस समय मेडिकली फिट नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से लग नहीं रहा है कि वो मेडिकली फिट नहीं है। सर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा ऐसे ही रहे हम लोग के बीच में सर, ऐसे ही फ्रेश रहे। आपका भी स्वागत है सर इस वेबिनार में। और जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, स्पेशली अन्नपूर्णा दीक्षित जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये इसके लिए, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और जो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर क्राइसिस एंड फार्म बिल, तो हमारे स्पीकर्स तो इस पे एनलाइटन करेंगे हम लोग को, दे विल थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक। बट आई वुड लाइक टू शेयर टू पॉइंट्स ऑन दिस कि हम लोग हमेशा हमारे देश में हम अपने आप को बोल रहे हैं, हमारे देश में हम सोल्जर्स को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या हम अपने फार्मर्स को भी उतना इम्पोर्टेंस देते हैं? मैं एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ ये इसमें, मैं अपने स्पीकर्स को भी और उससे भी कहना चाहूंगी, इस पे जरूर आप अपना राय दीजिएगा। क्योंकि हम अपने बोलते हैं कि हमारे सोल्जर्स जागते हैं तो हम सोते हैं, लेकिन हमारे उतना ही तो कंट्रीब्यूशन हमारे फार्मर्स भी देते हैं। वो उगाते हैं तो हमारा पेट भरता है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन। लेकिन हम वो जो इम्पोर्टेंस हम अपने सोल्जर्स को दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से हम देते हैं। तो इस पर आप जरूर विचार करिएगा। और एक चीज है कि जो हम कहते हैं कि हमारे फार्मर्स एक ये क्योंकि मैं क्यों शेयर करना चाह रही हूँ आप लोग के साथ, बिकॉज वन डे इन सम ऑफ माय क्लास मैंने बच्चों से पूछा था कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी कोई फार्मर से कराना चाहेंगे तो आप लोग करेंगी? तो हमारी लड़कियों ने सीधा सीधा नहीं बोला। दे सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू अ फार्मर। Instead of that, we want a person who, मतलब उन लोग एक जॉब वाले ढूंढना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स उनके जॉब वाले चाहिए, कोई लड़का, कोई फार्मर नहीं चाहिए उनको जो फार्मिंग कर रहा है। भले फार्मर हो, उनका खेती हो, सब कुछ हो, लेकिन वो बेटा उनका कहीं ना कहीं जॉब में हो। तो हम लोग ये ऐसा विचार क्यों रखते हैं कि एक फार्मर को वो इम्पोर्टेंस समाज में क्यों नहीं दिया जाता है जो मिलना चाहिए उनको? एक और ये एक विचार है क्योंकि अभी अब और भी आपने देखा होगा कि हम हमारी सरकार है, जो भी सरकार, हम प्रेजेंट सरकार को नहीं कह रहे, जो भी सरकार है या हम भी, वी ऑलवेज डिसाइड, वी आर थिंकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम सोचते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप हो गया, हमारे 4 लेन्स के सड़कें हो गई, 6 लेन्स की सड़कें हो गई है, ये सब हो गई। तो किसके बेस पे हो गई? जो फार्मिंग लैंड है उसको अक्वायर करके ना हुआ है। तो समवेयर वी आर लूजिंग अ लैंड, फार्मिंग हमारी कम होते जा रही है। तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही हमारे देश पे, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हम हमारी ओवर ब्रिज बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये बन रहा है। तो लैंड अक्वायर करके बन रहा है, ये फार्मिंग लैंड्स को अक्वायर करके बन रहा है। एंड दिस व्हेन द लैंड्स आर अक्वायर्ड फ्रॉम द फार्मर्स, दे आर हेवीली पेड फॉर दैट। They are heavily paid. When they are heavily paid, this money are sometimes misused by the farmers because they have never seen such type of so much amount of money in their life. तो वो कहीं ना कहीं इसको मिसयूज करते हैं। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है इसमें? हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं? इस पे भी एक विचार करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे स्पीकर्स इस पे जरूर कुछ अपने विचार रखें। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे टॉपिक पे I have not been asked to throw a light on the topic. I have been given only the task of welcoming each and everyone. So once again, on behalf of my college and my participants, I render my warm welcome to all the intellectual people who have joined in this webinar. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. We cannot move forward without the blessings of our patron, Dr. Shashikant Dikshit ji. So now I would like to invite Dr. Shashikant Dikshit ji, Manager Arya Mahila PG College, to bestow his blessings on us. Sir has been constant source of support and encouragement for all of us. So over to Dikshit sir. Hello, Annapurna, I am audible?
Yes, sir. Okay. First of all, I will like to congratulate for this one-day national webinar, Agricultural Crisis and Farm Bill 2020, with the Association of the Department of Economics, University of Allahabad. My principal, Dr. Rashina Dubey, he is always inspiring and motivating all the faculty members. That's why in the COVID period, we have number of webinars organized by this college. And in this series, the Department of Economics, earlier they have held so many seminars and very useful. And this is the burning topic of today's India, this agricultural crisis and Farm Bill 2020. And for highlighting this, you have requested and he has consented Professor Rajendra P. McNain Saab and of Hyderabad and Mr. Manmohan Krishnaji, Department of Economics, Allahabad. And the third, for organizing all this taking effort by this organizing secretary and convener, Dr. Annapurna Dikshit, with the Dr. Manju Banik, organizing secretary, and Dr. Namita Gupta ji, Department of Economics, Mr. Kuldeep Sharma, Dr. G.K. Sinha, Pradeep Kumar Singh ji, and other speakers who will highlight this. And as our principal said, because of the condition of the farmers. But I hope that this is more politicized by the Punjab and Haryana farmers. Otherwise, in the whole of India, I think 70% farmers are not in the favor. But you can throw light better on this because this is all a politically motivated agitation, and all the Delhi capital is heralded by these kisans. They are not look like an ordinary kisan. They are having TV, fridge, solar lights, everything is there. Food arrangements for 6 months. What nonsense going on in India? But this farm bill, what is useful or not, you can throw better light. And as the principal also said that I am not medically fit. So I want to say that I am medically 100% fit, but not physically fit because of my knee transplant held only 10 days back in Ahmedabad, sorry, and I'm in Varanasi. And as requested by our principal and Dr. Annapurna Dikshit, I am very much pleased to be present here and welcoming all of you and sparing your valuable time for this webinar. Once again, I won't take much time. Thank you each and everyone, and especially the Department of Economics and Allahabad University for hosting this conference. I wish all the success for this conference. Thank you. And namaskar, Thank you so everyone. much, sir. Thank you so much, sir, for your blessings and all your support you have given to us. Once again, Thank you. thank you so much, sir. Welcome. Thank you. As we know, India is an agrarian economy, and agriculture sector plays very significant role in the economic development of the country. This sector provides employment to 58% of Indian population, and it contributes to 15% of gross domestic product. This sector has recorded a growth of 4% in the year 2020. Through the new Farm Bill 2020, Indian agriculture sector has been liberalized and somehow privatized by eliminating the dangerous middleman, facilitating better realization for farmers, attracting investment, and enhancing technology. The Indian Farm Reforms of 2020 refers to 3 agriculture bills passed by the Parliament on 27 September 2020. The 3 bills collectively seek to provide farmers with multiple marketing channels and provide a legal framework for farmer to enter into pre-arranged contracts, among other things. The Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020, which relates to promotion and facilitation, allows the farmers to sell their produce outside the Agricultural Produce Market Committee, which are regulated markets. The AMPCs are government-controlled marketing yards or mandis. So farmers clearly have more options to whom they want to sell.
The government's logic is that the Agricultural Produce Marketing Committee is an obsolete institution from an age of scarcity, meant to protect the farmer, but has now become his oppressor. A monopoly cartel fixing low prices for the farmer's produce, forcing distress sales. The Farmers' Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, which relates to empowerment and protection, makes provision for the setting up of a framework for contract farming. The farmer and an ardent buyer can strike a deal before the production happens. According to PRS India, a standing committee on agriculture observed that the AMPC laws needed reforms as cartelization had begun to crystallize due to limit number of traders in AMPC mandis. Therefore, this law was passed in September 2020. The Essential Commodities Bill, Amendment Bill 2020, seeks to remove commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion, and potatoes from the list of essential commodities. This will end the imposition of stock holding limits except under extraordinary circumstances. The bills are called corporate friendly and anti-farmer by the farmers and others. The bills have faced strong protests from Punjab, Haryana, and some other parts. They are alleging that it will hurt the farmers' earning. They fear that minimum support price guarantee that was their safety net since the Green Revolution of the 1960s kicked in may be snatched away from under the pretext of giving the farmers more playing ground and better platforms. One of the main causes of the opposition is the uncertainty surrounding how the reforms will play out in the reality. Keeping all these factors into mind, the organizers decided to organize one-day national webinar as there are several issues which need to be known about this Farm Bill 2020. So now it's time to hear our eminent speaker. So in this series, first of all, I would like to invite our chief guest, Professor Rajendra P. Mamgen from the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad. Professor Mamgen is a development economist and having over 3 decades of research experience. He has a doctoral degree in economics from Jawaharlal Nehru University, Delhi, and specializes in the areas of labor, employment, migration, skill development, human poverty, inclusive development, and impact evaluation of government programs. With 25 research studies to his credit, Professor Mamgen has authored and co-authored 9 books and published more than 70 research papers in various national and international journals of repute. Currently, he is Professor S.R. Sankaran Chair, Rural Development, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad. He has worked in reputed research institutions in the past, including till recently as a professor of economics in Giri Institute of Development Studies, Lucknow. Professor Mamgen has been a member of various policy advisory bodies of reputed institutions in India. He is also a member of editorial boards of reputed journals, including editor of Journal of Social Exclusion Studies and associate editor, Indian Economic Journal, both being published by Sage Publications. He has been managing editor of the Indian Journal of Labor Economics for 25 years and managing editor of Indian Journal of Labor Economics for 25 years and immensely helped in its transformation. He has also organized several national and international seminars, workshops, and conferences related to his areas of interest. So without much ado, now I invite Professor Mamgen
to deliver his inaugural address. Thank you very much, and respected Professor Rachna Dubey, Principal Arya Mahila College, Dr. Shashikant Dikshit ji, Manager Arya Mahila PG College, Dr. Annapurna Dikshit, Seminar Webinar Coordinator, my fellow colleague Professor Manmohan Krishna ji from Allahabad University, and Dr. Manju Banik of Arya Mahila PG College. It is indeed a great, I think, honor to me to give this opportunity to be here and to share my views on the very topical issues, I think, on which I am not an expert. I must say in the beginning that, no, I am not an expert in this topic, but, Annapurna has, requested me, and I don't know, I mean, how I said that, okay, I'll be speaking something, but this much honor she'll be giving me that, to inaugurate this seminar. I think it is, it is what is it called, it is more than great, things she has done on me. In fact, I have an interest in the issues of agriculture and allied activities. Much of my work, as you know, that it is basically on labor, particularly focusing on marginalized communities, scheduled caste, scheduled tribe, OB, and other communities. But anyway, I think, but this agriculture is also one of the important concerns, because it is a source of livelihood to many of the majority of the people in the country. So today I have chosen, I'm really grateful to all of you, to give me this opportunity. And I have chosen a topic on understanding Indian agrarian crisis through the prism of new farm bills. So basically, it is, I'm talking about, I'm not, either taking a stand on in favor or against, as was being said, but I'll be putting some plain facts in front of you, and for your food for thought, so that you will be, I think, you'll be much, aware. You are more enlightened people gathering here, who will be taking their own views, because it is a kind of, I think it is a kind of, very, very important topic, and that needs the nation's attention. And I think, before that, what I will say that, before that, what is happening, because if you are talking about the new farm bills, we must try to understand what are some select stylized facts of the Indian agriculture and this Indian economy, which has been, under which the economy is undergoing through during last particular 3 decades after the economic reforms of early 1990s. So as all of you know that, because that Indian agriculture is a very, very important source of livelihoods. And rural economy as per se is also very important. You know that about half of the national income and more than 2/3 of the total employment is generated in rural areas. So it is a big sector, big economy in terms of GDP. Also, half of the GDP is coming from rural India. Agriculture and allied sector, the contribution in the total GDP, gross domestic product of the country, is around 14%. So it is a 14%, and it is implying nearly half of the workforce of the country. So you can see the kind of inequalities, that for half of the population is sharing only 14% of GDP of the country. So this spectrum of inequality you can understand in the rural situation in agrarian economies. Apart from producing almost all agricultural output, rural areas contribute about half of the manufacturing and construction sector's output, and 1/4 of the services sector output in the country. So these are the, these are based on the kind of bifurcation of rural and urban GDP. So you will try to, you will appreciate that, that this is manufacturing and construction sectors are also very, very equally important sectors in terms of their contribution to the gross domestic product of the country. Rural areas are also characterized with a low level and wide disparity in per worker productivity. As I mentioned, that only 14% of the nation's GDP is being shared by half of the population. Even within the rural economy, within the agriculture, there are huge disparities also.
So at the one end, there are those who are sub-marginal, very marginal farmers, and at the other end, there is very small, there are big farmers, and these farmers have naturally very high levels of per worker income. Another thing which happened during last 30 years is that during the economic reforms that almost all capital intensive sectors switched to urban areas, and they did hardly generate any employment to absorb the rural labor with decent work conditions. You are creating the employment in urban areas, but the employment is mostly mostly is a vulnerable employment, and that is of the very lower quality of employment. Though it may be from the rural perspective in terms of wage rates, it may be called a better employment, but if you see the conditions of work, and which has been exposed during the recent reverse migrants by the recent migrants, you will find that that the working conditions of rural migrants in urban India are highly deplorable also, and that is another important area. Another thing that the services sector, which has been it is highly concentrated in I think in terms of both employment and output in urban areas, as I mentioned. It was only the construction sector where rural share in both output and employment improved, and employment grew faster during recent period as compared to the output. Another important feature which must be noted, if we're talking of the agriculture, rural development, or rural economy, it is the very fastest withdrawal of women from the agriculture. In fact, that there has been what you call the kind of the net decline, absolute decline in the number of women in rural area who have been participating in rural labor market. So they have largely withdrawn from agriculture, and that has been shown by the NSSO and periodic labor force survey data, that how this decline is not only centered among the younger age cohort, say 15 to 29 years, which is attributed largely for the in favor of educate. They are withdrawing in favor of education, but it is this kind of decline in the absolute number of women workers is also witnessed among the 30 plus age group of women. And I think that shows that that in rural area there's a lack of employment opportunities, and which is agriculture over the years has also seen a lot of technological changes, which has reduced the demand for female labor, particularly in weeding, harvesting operations, and that led to their withdrawal from the labor market. Of course, there is some recent trend that there's women are gradually now coming up to, I think joining the labor market, but still that the absolute decline is there. And the other thing which our principal was mentioning, that youth are not willing to take up the agriculture. She was mentioning that that the young women are not young girls are not willing to marry to the farming families. So the youth are not. If you ask the youth of agriculture farming families, they are not willing to work in agriculture. And you will be surprised that the average age of farmers is 50.1 years. That's why you can see all the farmers who have been protesting. Most of them you can see that they are aged people. So the average age of the farming is 50 years, and that is due to basically that the young cohort is not interested at all in agriculture. And because due to the fact that agriculture is not a remunerative activity, no more is a remunerative activity. The rural sector, the rural economy is no more the so-called what we call the rural economy per se in terms of dependent on agriculture. I think as I mentioned that around 40% of the GDP is coming from 40% of rural GDP is coming from non-farm sector. So this is, you can see the kind of declining importance of agriculture, and people are migrating to cities in a large number. There's a recent trend in migration prior to COVID. People are not finding remunerative jobs in the rural area, and in the anticipation of better future and more wages, they have been growingly migrating to the urban centers in search of jobs. And but the kind of jobs, as I mentioned, they are finding are vulnerable,
and they lack with the social security. They do not qualify any sort of any kind of what you call a decent work of decent work qualities, which we everybody say that the work should be of the decent nature, means that it has a dignity, it has a social security, it has a remunerative income. So these all qualities of such kind of work are rarely missing in most of the unorganized sector work in the country. And this kind of vulnerability has been exposed by the COVID-19 related lockdown. And you have seen the heartbreaking journeys of reverse migrants who have been forced to return in the absence of lack of social security, lack of fear, lack of any kind of security in at the place of their destinations in urban areas, and they were forced to migrate back to their villages. So this is a kind of situation. This is just some facts about the rural economy. The other thing about the rural area is that persistence nature of agrarian distress. As you have read, as you have seen, that agriculture is seeing a persistence of distress, which accelerated with the introduction of new liberal policies in early 1990s, as I mentioned earlier, with the declining public investment in agriculture development, rising cost of cultivation, and other market vagaries. So this persistence of agrarian distress can broadly be classified, if you want to understand this, what is the agrarian distress which is prevailing inside the rural India, it can be broadly due to the 5 factors. First factor is that that I mentioned, that it is unviable agriculture. As everybody knows, that more than 82% of land holdings less than 1 hectare are marginal, with average size is 0.31 hectare. So you can imagine that that the very large majority of people are small marginal farmers. Even within that marginal, there are very huge percentage of some marginal farmers. And agriculture is a subsistence. They pursue agriculture as a subsistence activity. A recent NSS survey clearly has mentioned that the worsening situation of farm labor households. It has shown that that about 2/3 of farmers, farming households, their consumption expenditure is much higher than their net income received from them. So they are basically indebted households. Their consumption is much higher than their incomes, and that is also hampering. And this is a very huge proportion. I said around 2/3 of the farming households belong to that category, and this is hampering the private investment in agriculture. The second important reason for this persistence agrarian distress is ineffective minimum support prices system in the country. It has been there since long, but as you know that, and as you may be watching in TV, reading in newspapers, that this MSP is just catering to the very small segment of farmers, particularly farmers, and mostly it is more successful in Punjab, Haryana part of the country, but not other parts of the country. So MSP is there, and farmers are not, whatever the prices hikes are being given there from time to time, the farmers are not benefiting. Bulk of these benefits are being taken by the what you call the middlemen operating in the agricultural value chain. So we are having a very weak agricultural value chain, where the most of the bulk of the benefit is taken by the middleman. Then the third important reason for the persistent agrarian distress is rising cost of cultivation and adverse terms of trade. And that is that rising cost of cultivation, particularly labor cost and cost of inputs like fertilizers, etc., is the main reason for the non-viability of cultivation. Farmers are distressed mainly because prices of several farm products like pulses, oilseeds, and vegetables have crashed at different points of time. As a result, farmers are subjected to distressed sale as their products are priced much below the level of MSP. Distress often linked to the market failure and as well as the crop failure. So this distress is not only due to the crop failure as we generally perceive, but market failure also multiplies the farming agrarian distress. So these the fourth factor
which we must understand is the very, very high incidence of rural indebtedness, which has increased over the years. The coverage of the institutional credit, there are many banks. Banks are there, public sector banks are there, regional rural banks are there to cater the needs of farming community, farming households. But still, I think only 56% of the total credit is being given by these informal institutional sources such as banks and RRBs. Rest of 44% comes from the non-institutional sources like money lenders, merchants, and these what we call middlemen. So a farming household is frequently taking loans, and that loan, I think that makes him prone to be exploited with the hands of middlemen, as it is well known. And then the last one is that the fifth one is that there is a very weak value chain in agriculture, in the sense that those who are at the bottom end, like farmers, their voices are very weak. Their bargaining power is very weak, and as a result, they are not getting the kind of their due share, and the competitive forces do not operate, I think, in the value chain. And due to that, what happens that middlemen and at the upper end level, all the benefits, profits are maximum higher, which hardly percolates to the farmers. So they are these are something which needs to be noted. Now I'll just briefly, after this, I'll briefly, I think, because with these are the kind of hardcore facts about the agrarian distress, about the rural economy, that it is no more as a kind of it is largely a subsistence activity for a large number of large proportion of rural households, agriculture households. So these new farm bills, the three new farm bills which are being talked about, I'll think, in the next few minutes, I'll touch upon these new farm bills, and I will just say that what are the provisions very briefly. I think bullet points are there. What are the brief provisions under these each farm bill, and what is the opposition? Why people are opposing these bills? I think that is I'll be reflecting on this. So let us first, I think, because the claim is that these new key provisions of new farm laws will help small and marginal farmers who do not have means to either bargain or their produce to get better price or invest in technology to improve the productivity of farms. So these are being valorized. They are being treated as a kind of heroes. I think that these bills are being treated as a kind of heroes, and they'll change the whole market economy, whole the farm economy, whole the farm households economy. And I think that it will be the time will tell that what is happening. But let us understand the kind of provisions under these bills. So there are mixed reactions, and it has, as everybody see, that it has attracted agitations and criticism from different parts of the country, from different groups of the society. And I think that is a bone of contention, and how this can be, whether this bill will be very, very critical, very, very important, very, very useful to farmers. It will only time will tell us. Let us first talk about the agriculture marketing bill, which is commonly known as Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. So there are provisions under this bill. The provision is that to create an ecosystem where farmers and traders enjoy the freedom to sell and purchase farm produce outside registered mandis under the state's APMC. So this is another set of provision is being created. Additional provision is being created to sell the farm produce apart from the what we call the established mandi systems. The other thing is to promote barrier-free interstate and intra-state trade of farmers' produce. So farmers from one state to another state can easily take their his or her produce
and there will not be any interstate or intrastate barriers from one district to another district, from one state to another state. There won't be any barrier. So this is going to be barrier free, and it is being argued that this barrier free, due to this barrier free trade, farmers will be able to realize more benefits. Farmers will be able to realize more prices. So, and that will also add to their profits. So that is being one of the important stand in behind this bill. The other thing is that to reduce the marketing transportation cost and help farmers in getting better prices. So if you are it will have the provision of transportation to reduce the transportation cost and helping the farmers to get the better prices. That is, I don't know how it will happen, but this is there, because if you are pooling together your produce and then going for a marketing, as it is being done in certain cases also, so that definitely reduces the market cost. So it is an example, suppose it is example of mother dairy, which is and other big retailers also, who are in the vegetable production sector, who are going to at the farm gate and collecting the produce from farm gate itself, and that is saving the transportation cost of the farmers, that is saving the time cost of the farmers, and that is also giving some better relatively better prices to the farmers. So that kind of provision, I think this bill also provides. And I think that another thing, that to provide a facilitative framework for electronic trading. So electronic trading is also the new norm, and this bill is likely to promote this electronic trading. So this is I think this is one sort of bill, and this bill has been criticized, because this bill is criticizing for because it is being said that agriculture marketing is a state subject under Schedule 7 of the Constitution. This means that the center has no business making this law. And if there are two laws, one law is operating in case of APMC, and other law, central law, if it is operating in outside the APMC, this will create a confusion. This will create a kind of conflict, and that will have a kind of dual laws, and which will be ultimately hampering farmers. That is what it is being argued. And today's recent, the recent article by John Ray, you can read that article also on that argument. The other is that other argument that state will are likely to lose the revenue. They won't be able to collect mandi fees if farmers sell their produce outside the state APMC markets. So that is another fear that they may be losing revenue. The other thing which is also quite natural is that that what will happen to commission agents in the states if entire farm trade moves out of the mandis. So the commission agents, I think, which is a long chain in the APMC sector, they are also threatened, and their livelihoods are threatened. And there is a serious, I think, another important thing is that there are serious issues of efficiency, equity, and sustainability with the current regime of agricultural marketing. Because if you are, as I mentioned, if you're in a value chain, if you are if your commission agents, your top top wholesalers, if they are bored, if they are making cartels, so what will happen to poor farmers? They cannot make the cartels. They have to sell their produce. So that will again create, it will not, how this bill is not asking, this bill is particularly silent on the securing the rights, securing the kind of rights of the farmers, those who are at the value chain, at the lower level of the value chain, and in particular their interest of what is called the minimum support price. So that's what farmers are demanding, for the minimum support price for their produces. And this this bill is being treated as that is seeing that that ultimately this bill will do away with the minimum support price system, procurement system, and that may again hamper the well-being of farmers, interests of farmers in the long term. So it is being I think that's another thing which is for this bill is being criticized. And it has to be seen, because there are experiences that also that that minimum support prices are
Hardly there are minimum support prices, as I mentioned, for around 66, 67 communities. But the kind of realization of this minimum support price is very, very less. And it is a kind of, again, totally, I think, the political game also, that which is also going on there. So I'll just briefly now come on the next bill. That is a bill on contract farming, which is called also the Farmer Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020. So this bill is about the contract farming, and it has a provision. It has a very, very interesting provisions where the farmers can enter into a contract with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers for sale of future farming produce at a pre-agreed price. That is another very, very, I think, important and interesting provision under this bill. Marginal and small farmers with land less than 5 hectares will gain via this aggregation through the contract, because their land will be aggregated. They can pool their land, and their land can be pooled, and that they can make a kind of contract with the contractors. So that is there, and that window is also there. So it is not the kind of individual farmers, but marginal farmers, small farmers can pool their land and enter into the contract with the agribusiness farms. So another thing is that that this while entering into this contract, virtually the transfer it will transfer the risk of the market unpredictability from farmers to sponsors. Those who are agribusiness firms, those who are entering into the contract with the farmers, they will be mainly bearing the burden of the uncertainty, unpredictability in the farming sector. The other is that it will enable farmers to access modern technology and get better inputs, improved inputs and knowledge. It will also reduce the cost of marketing and boost farmers' income. Farmers also can engage in direct marketing by eliminating intermediaries for full price realization, and it will also be effective dispute resolution mechanism will be there to redress their grievances in a timely manner. So these are the kind of certain provisions under this bill, and the farmers are opposing. The opposition is there that this bill, the farmers are arguing that this will be the weaker players, because farmers will be the weaker players in terms of their ability to negotiate what they needed. And there are experiences, I think it is coming out, and you can see that there are many experiences where contracts have been violated, not by the farmers, but by the firms, those who are entering into contract, and that way farmers were always disadvantaged. By the violation of the contracts, the farmers were the weak power. They could not go to the court, and that's why their voices are not being listened. It is a long and lengthy process of entering into the legal battle, which a farmer will hardly be able to take on. So being a big private companies, exporters, wholesalers, and processors and sponsors will have the edge, I'm mentioning, in the market, and they can manipulate the market. This is what is being feared. Now the last bill is that that is also related to this farm bill. One of the part of the farm bill is related to the Essential Commodities Amendment Bill 2020. So this bill is, as Purna was mentioning, that it aims to remove commodities barriers, ceiling on the commodities like cereals, pulses, oilseeds, onion, and potatoes from the list of essential commodities. It will do away with the imposition of the stock holding limits on such items except under extraordinary circumstances like war. This provision will attract private sector FDI into the farm sector, as it will remove fears of private investors of excessive regulatory interference in business operations. I think that is another provision is there. It will also bring investment for farm infrastructure like cold storage, building of cold storages, and modernizing food supply chains. One of the important, I think, shortcoming of agriculture infrastructure is that we are having very weak agriculture infrastructure, and this bill will help in
augmenting that infrastructure in future. It will also help both farmers and consumers by bringing a price stability, because due to the seasonal nature of agriculture, it will retain the prices stability, because if you are having better cold storage facilities, so the prices, seasonal fluctuations in prices can be avoided. So that is one of the important, I think, provision under this bill. It will also create competitive market environment and cut wastage of farm produce, because if you are having a good processing units, if you are good cold storage unit, if you are having good food supply chains, a lot of farm produce which goes waste can be saved. So a portion of this bill is that that the price limits mentioned in this bill, these are the limits of storage are unlimited, because it is not mentioned that there is no limit. So it will be, I think, the new essential commodities amendment will be basically it is being feared that until there are it will be it will lead to the kind of stock holding, and it may lead to the speculative purpose in the level in the market, and as a result, maybe that it can, instead of price stabilization, it may lead a persistent increase in the prices, and that will affect the pockets of poor, not only of the more the pockets of the poor and ultra poor people in the country. And that is that big companies will have the freedom to stock commodities, and it means that they will dictate the terms to farmers, which may lead to less prices for cultivators again. So this is and then I think there are some couple of these opposition problems with these bills, due to which these provisions, I think are being criticized. So I think these bills, basically I will argue that these bills need to be interpreted in terms of the ongoing agrarian distress in the country, and how these are, whether these, as most of you are from economics background, would be economics background or social science background, you have to see that that how these bills are likely to impact upon the livelihoods of those who are marginal and sub-marginal farmers, who are who are the big number. I think for them, there is an alternative strategies that that many of them would be need to be brought out of this subsistence marginal agriculture into the more productive, more lucrative rural non-farm sector. But before that, and I'll just mention that because what is the way ahead, that to revive the agriculture economy of the country, or to revive the whole rural economy of the country, I think it needs the revival of agriculture through the public investment. What we have noticed that during last 30 years, there is a drastic reduction in the public I'm saying net reduction at the real investment in public sector. Public investment in agriculture sector has grown at a very minuscule level. So that needs to be pegged up, and that will reduce the cost of irrigation, electricity, and that will also fertilizer, storage, marketing sector, etc. So that is, I think, one of the important factors we have to revisit to our the public investment policy in agriculture. The second is, I think, that we have to focus on diversification of farm sector in favor of commercial crops, because much of the things which is going on in Punjab, Haryana is a rice wheat syndrome. But most of the farmers, marginal farmers, they are going to the commercial crops in fruits and vegetable production, but these are not fetching them remunerative prices. Their losses are very heavy, uncertainties are there. So how to cover them with the kind of risks, that farm insurances. So this is, I think, another dimension that we have to encourage the crop insurance for all crops, for risk to recover their risk of the farmers and for the failure of the crops. And not only for the crop failure, but also sometimes if market fails, so that crop insurance should be made available to the farmers. I think that is insurance is one of the important sector which is there, but the progress on that sector is also needs to be, I think, studied very intensively. The another important factor is that you declare the MSP, and but its effective adherence is a problem. So every community has MSP, but there are very few takers. Their government, many times it is turned away.
So where the farmers go, I think that kind of political economy should be the political economy of MSP should be revisited, and I think it should be made mandatory that if somebody is not, if other private players are not taking it, so let it be that government should procure it at the MSP. So this will help in stabilizing the farm prices. The other thing is that that institutional credit I was mentioning. So institutional credit really needs to be picked up. It should be made more easier, more accessible to farmers, so that their dependency on the middlemen, their dependency on the money lenders is reduced, their dependency on the commission agents is reduced. And I think that is one of the major factor which has been found that that due to this indebtedness, farmers are compelled to sell to their produce to the commission agents. So for safeguarding the interests of farmers and promoting equality, it has to be ensured that that there do not exist any kind of monopolistic competition does not enter into the agriculture market. Because what if monopolistic competitive forces, if the cartelization enters into the labor in the agriculture trade and marketing, I think the farmers are going to be worst affected. Then how do you do away with this monopolistic competition is not, I think it is a silent feature among these acts one has to understand. And it has to ensure that the contract farming does not turn into an exploitative farming by shifting losses to the farmers. It has been the experience in Punjab farmers, it has been experienced other also which have contract farming. So their experiences of contract farming are not that good, not that great. And how these, how these bills are ensuring their safety in this contract farming is, I think it has to be ensured. Then other thing is that in the whole agriculture production sector, we have to have, I think we have to emulate the dairy cooperative model of the Indian government of India, because that I think that if we can adopt the dairy model, cooperative model, and can switch to the cooperative farming model, I think there are a lot of issues of credit, lot of issues of marketing, lot of issues of quality will automatically solve through this cooperative farming model. Then last but not least, I think the promoting non-farm rural livelihoods is very, very important to shift, as I mentioned, from subsistence agriculture, a large number of population, landless agricultural laborer, small marginal farmers, to manufacturing and enterprises. And this is possible, and it must be promoted under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And under this, we are propagating that the cluster-based approach of development is very, very useful. The cluster of gram panchayat you can develop based on the commodity, based on certain niches of that area, and that cluster based development holistic, it should be the holistic development approach consisting of all facilities there, and it will definitely lead to the manufacturing and services enterprises to be there. And it can be developed under this framework, cluster-based development framework, and that is, I think, that will help in creating, I think, remunerative employment opportunities outside agriculture. It will I think, it will take away the excess labor from agriculture to the non-agriculture sector, and it will help in reducing the vulnerability of the many of the rural labor households. I think this is the kind of what we need the agriculture or rural development of future in India. So it is not so simplistic that that these three bills will automatically create the kind of environment which will transform the whole rural economy. There are many ifs and buts. There are many good points. There are many loopholes also which needs to be addressed. And I'm sure that that these participants of this seminar will discuss it in their future research. Thank you very much. Thanks a lot for your kind patience. Thank you so much, sir, for your wonderful talk. Sir has rightly pointed out that
Sir has rightly pointed out that dedicated efforts are required for the upliftment of agriculture sector and farmers. Only through this, these new forms bill could be proved as game changers for the farmers. Once again, thank you so much, sir, for sparing your valuable time and delivering a wonderful talk. Now I invite the keynote speaker of this webinar, Professor Manmohan Krishna from the Department of Economics, University of Allahabad, to enlighten us through his deliberation. Over to Manmohan Krishna, sir. Professor Manmohan Krishna is having more than 40 years of teaching and research experience. He has authored and co-authored several national and international publications, and also working as a reviewer of reputed professional journals. He is having an active association with different societies and academics around the world. Professor Manmohan Krishna made his mark in the scientific community with the contribution and widely recognition from honorable subject experts around the world. He has received several awards for the contributions to the scientific community. His major research interest involves economics. Over to Professor Manmohan Krishna, sir. Sir, am I audible? Am I audible now? Yes, sir. You are audible, sir. Is my screen is also there? Yes, sir. Your screen is visible. Okay. खाली screen से इन्हें करना बेटा? Yes, sir. Good evening, friends. Professor Mamgan ji and other luminaries of the Department of my video is also there. Can both the things run together? The video and the screen? No. Yes, sir. It can be run. Okay. Sir, you So- just show your video. Just you might think it has been stopped. Your video is not coming on your screen. Yes, sir. Coming. It's coming. Is it coming now? Yes, sir. Okay. So first of all, friends, thank you for inviting me. Second of all, I would like to tell you one of the very clear things that I would also like to speak in Hindi because I think there are a large number of students. Yes, So sir. I am also sharing my screen with you people Yes, sir. about these three things. But I would like to speak some things in Hindi as well. Because Sure, for sir. better comprehension, acts are already there. They are written. They can be read by anybody. But we need to learn them because our farmers, or rather 80% of the population, must understand them. Similarly, our students must understand them. We shall not say this is good or bad. Let them themselves decide what is good and what is bad. हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कोई जो बिल हमने बनाया है ये बहुत अच्छा है, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा. It will have different effects on different people. So whenever we are discussing these things, I would like to make it clear that I'll try to explain these bills in very simple language. Why? Because we must understand what these bills are, what they actually mean, and what can be the likely impacts, both positive and negative. दोनों प्रकार के प्रभावों को हम आप पर छोड़ दें तय करने के लिए कि क्यों बना बिल, उसमें क्या चेंज हुआ, इस चेंज से क्या प्रभाव पड़ सकता है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर बिल्स, मैं बड़ा क्लियर हूं. वी हैव टू स्पीक अबाउट 4 थिंग्स. 4 चीजों के बारे में वी हैव टू स्टडी. जैसे सबसे पहले जिस बिल के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको हमने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाज मेड इन 1955.
1955 में बना था, लगभग 65 वर्ष पूर्व, और 65 वर्षों के बाद इसे हमने चेंज किया। व्हाट वाज द बिल? बिल में था क्या? द गवर्नमेंट हैड द पावर. व्हाट पावर? It can decide that how much stocks can be held by the brokers and others at any point of time. यानी जो लोग होलसेलर्स हैं, जो बहुत सारा सामान अपने पास रख लेते हैं, वो कितना सामान रख सकें, क्यों रख सकें, उनसे कब निकाला जा सके, बना था। क्यों बना था ये भी बता देता हूं। इन 1955 व्हाट हैपेंड, जब गेहूं की फसल आती थी उस समय इसका दाम 75 पैसे प्रति किलो होता था, और 7-8 महीने बाद इसका दाम हो जाता था 1 रुपए 40 पैसे प्रति किलो। उस जमाने में ये बहुत महंगी चीज हुआ करती थी, यानी द प्राइसेस जस्ट डबल्ड विद इन 7-8 मंथ्स। तो सरकार को लगता था जो होर्डिंग हो रही है, होलसेलर होर्ड कर ले रहे हैं, इनको अगर हम होर्ड न करने दें तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में सामान आ जाएगा। तो ऐसी सप्लाई जिसको स्केर्स करते थे होलसेलर दाम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटिंग के लिए, उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था, दैट देयर आर सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज आप रखिए अपने पास, यू कैन हैव ए स्टॉक, बट व्हेनेवर गवर्नमेंट वांट यू हैव टू डी होल्ड। अगर प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो सरकार जब चाहे निकाल देगी। इसमें कई बार बड़े झगड़े भी होते थे, द प्रॉब्लम्स वर वेरी क्लियर। जो होर्डर्स होते थे छुपा के रखते थे, बहुत सारे इलेक्शन इसमें हारे जीते गए। प्याज की होर्डिंग लोगों ने कर दी, प्याज का दाम 6 रुपए से 60 रुपए किलो हो गया। सो दिस काइंड ऑफ होर्डिंग जिससे एक्सेसिव प्राइस बढ़ाया जाता था, उसको इस लॉ के अंतर्गत 1955 में रखा गया। फ्रॉम 1955 टू 2020, 65 वर्षों में बहुत समय बदल गया, एंड दिस कानून में परिवर्तन कर दिया गया। देखिए क्या परिवर्तन किया गया है, मैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, एंड यू कैन ऑल्सो सी इट इन हिंदी। द सप्लाई ऑफ सच फूड स्टेप्स, कौन कौन से, सीरियल, पल्सेस, एडिबल ऑयल, इनको ऑफिशियल गजट से ही अब इनको कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी अब कोई सप्लाई ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट, दिस कैन नॉट गो एंड चेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ दिस कैन बी डन थ्रू ओनली ऑफिशियल गजट, और उसमें भी बड़ा क्लियर है, अगर वॉर हो तो, फेमीन हो तो, या नेचुरल कैलामिटी हो तो तभी सरकार कोई भी होर्डर का स्टॉक चेक कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। दैट मीन्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज नाउ गॉन। अब सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। आगे जो लिखा है वो और भी जरा सावधान से पढ़िए। एनी एक्शन ऑन इंपोजिंग स्टॉक लिमिट शैल बी बेस्ड ऑन प्राइस ट्रिगर। अगर सरकार को कभी स्टॉक के बारे में सोचना होगा तो कैसे सोचेगी? बशर्ते दाम बढ़ जाए। और दाम कितना बढ़ जाए जरा वो भी ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है साफ साफ, मिनिमम ऑफ 100% इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 100% का मतलब अगर सेब का दाम 200 रुपए है और अगर 400 हो जाए तब सरकार इंटरफेयर कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। इसी तरह अगर व्हीट वगैरह का दाम, चावल वगैरह का दाम 20 रुपए किलो है, अगर 50% से नहीं बढ़ेगा तो सरकार इसको चेंज नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। सवाल यह है कि इस तरह की भाषा कौन समझता है? 100% ट्रिगर ऑफ प्राइसेस, ये कौन सा किसान समझता है, कौन सा मजदूर समझता है, कौन सा हम समझते हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्राइसेस वी आर टॉकिंग ऑफ? अगर 20 रुपए किलो से गेहूं का दाम 30 रुपए किलो हो जाए तो कहां पर? हापुड़ की मंडी में, दिल्ली की मंडी में? सीधा मतलब है सरकार विल नॉट एंटर इनटू दिस नाउ। बिल्कुल क्लियर कानून है, इसमें कुछ बहस करने की बात नहीं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मतलब था आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएटेड बाय होर्डर्स, स्पेकुलेटर्स, ये जो दलाल होते थे, इनके ऊपर एक्शन लेने का सरकार का अधिकार था। अब ये अधिकार सरकार ने कहा हम नहीं रखना चाहते।
कभी कभी रखेंगे, मान लीजिए कभी फेमीन हो जाए, वॉर हो जाए, उसके अलावा नहीं रखेंगे। और उसके साथ एक और चीज भी कि हम किन किन लोगों को नहीं छुएंगे, ये भी लिखा हुआ है बड़ा क्लियर। हम होलसेलर को नहीं छुएंगे, हम एक्सपोर्टर को नहीं छुएंगे, हम प्रोसेस के चेन वाले को नहीं छुएंगे। मतलब सरकार इसमें प्राइवेट पार्टीज को फ्रीडम देना चाहती है। यू कैन नाउ होल्ड, यू कैन नाउ स्टॉक। अब इसके फायदे क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, वो भी समझिए। सरकार को लगता है, आपके समझ में बड़ा क्लियरली आना चाहिए, सरकार को लगता है, व्हाट डज गवर्नमेंट थिंक इज, कि जब प्राइवेट पार्टी को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी तब वो बनाएगा वेयर हाउस, तब वो बनाएगा कोल्ड स्टोरेज। अब उसने कोल्ड स्टोरेज बना लिया, कुछ होर्डिंग कर ली, और जरा सा मौका आया और सरकार का एक इंस्पेक्टर आया, उसने कहा निकालो सब सामान बाहर। नाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी उसको हर समय एक शंका में पैदा डाल देती है। आपको मालूम है कि वेयर हाउसिंग में 100% एफडीआई अलाउड है 2005 से। वेयर हाउसेज नहीं बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं बन रहे हैं। व्हाई? बिकॉज पीपल आर वरीड, हम बना के करेंगे क्या? क्योंकि अगर हमने होर्ड कर दिया, किसी समय हमने 40 रुपए खरीदा और दाम बढ़कर 60 हो गया, और हम उसको अगर बेचना चाहें तो वी कैन नॉट, क्योंकि गवर्नमेंट आएगी एंड कहेगी नो यू कैन नॉट हैव दिस मच स्टॉक। अब सरकार ने अपने आप को ही बांध लिया, वी आर नॉट गोइंग टू चेक यू। अब अच्छा है बुरा, मैंने आपसे पहले बताया, आई वोंट स्पीक ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि दोनों इश्यूज हैं। आप चाहते हैं अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, तो प्राइवेट आदमी तो बिना प्रॉफिट के क्यों आएगा, जस्ट टेल मी। और सरकार के पास क्या इतना पैसा है कि इतने सारे वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज बनाएगी? अगेन दैट्स ए डाउटफुल क्वेश्चन। सरकार के पास बहुत सारे काम है, इतना पैसा शायद सरकार के पास है नहीं। तो इफ यू वांट प्राइवेट पीपल टू कम, केन्स इतना बड़ा अर्थशास्त्री था, उसने लिखा दे कम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, इसके बिना वो आते ही नहीं। तो उनको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब उनको कोई सर्टेन वातावरण, एटमॉस्फेयर दिया जाए। तो ये उनको सर्टेनिटी प्रदान की जा रही है कि वॉट एवर यू डू वील अलाउ यू। ट्रिगर हम करेंगे तो कब करेंगे? जब बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं। और ये जो ट्रिगर की परिभाषाएं लिखी है, 100% दाम बढ़ जाए, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर माने सारे बागवानी प्रोडक्ट्स, एक नहीं सारे बागवानी प्रोडक्ट्स, और सीरियल्स में 50%, ये बहुत कम नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्राइस राइज है। दिस इज ए ह्यूज प्राइस राइज, आई मस्ट एडमिट इट। क्योंकि 50% दाम बढ़ना चने का, चावल का, गेहूं का, अचानक इन मार्केट बहुत कम होता है। इट हैपेंस ओनली व्हेन द मार्केट्स कंप्लीटली फेल, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। तो जो नंबर 1 लॉ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इट गिव्स प्राइवेट पार्टी सर्टेन स्पेशल यू कैन से पावर्स, के वो चाहे तो खूब सारा इन्वेस्टमेंट करें, नई एग्री बिजनेस कंपनियां आए, नए नए स्टोरेज खोलें, हाउसेस खोलें, लेट देम स्टोर, सरकार विल नॉट इंटरफेयर, वो जितना चाहे सामान रखें, प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट हो सकता है, प्राइस घटने पर लॉस भी हो सकता है। तो दिस इज ओनली फॉर बेसिकली कॉलिंग ए प्राइवेटाइजेशन, जो 1990-91 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, उसको अब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में करने जा रहे हैं। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन होगा विल डिस्कस इट लेटर। सेकंड इज अबाउट एपीएमसी। एपीएमसी के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको तो हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एपीएमसी के बारे में लोगों को जानकारियां क्यों नहीं है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अभी द प्रीवियस स्पीकर स्पोक अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है, ये पहली दफे दिस वाज क्रिएटेड इन 1955-56 अगेन। मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे कानून किसी समय में क्यों बने थे, और सोचने की बात है। एक ऑल इंडिया रिजर्व बैंक रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था, जिसमें पता चला कि हर किसान पर लगभग 500 रुपए उधार है, और उस जमाने का 500 माने आजकल का लगभग 50,000 प्लस। तो क्यों होता था? वो सब साहूकार से उधार ले लेते थे, और साहूकार क्या करते थे, खेत पे ही फसल खरीद लेते थे, और फिर वो उसको बाजार में ले जाकर बेचते थे, तो किसान को बहुत आना पाना दाम मिलता था। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल इट डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि बेचारे मजबूरी में बेच देता था। तो एपीएमसी क्रिएट की, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने की, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका कोई रूल भी नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट्स ने एपीएमसी क्रिएट किया। इसका क्या मतलब है? आपके घर के आसपास हम एक मंडी बनाएंगे, सहसो मंडी, फूलपुर मंडी,
रावतपुर मंडी, विल मेक ए मंडी। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। मंडी में क्या होगा? शेड होगा, रेगुलेटेड मार्केट्स होंगे, वेट मशीन होगी, ऑक्शनर होगा, ग्रेडर होगा, इन सबको बनाने में खर्च आएगा। तो फिर एक मंडी टैक्स लगेगा। लेकिन शर्त क्या है? 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के जितने किसान हैं उनको उसी मंडी में सामान बेचना पड़ेगा। वे किसी दूसरी मंडी में जाकर सामान नहीं बेच सकते। दे कैन नॉट सेल दैट कमोडिटी इन एनी अदर प्लेस। तो आपके घर के पास एक मंडी है, वो मंडी क्या है? रेगुलेटेड मंडी है। आप वहां जाइए, वहां आपके सामान की बिक्री होगी। खरीदेगा कौन? जो वहां पर रजिस्टर्ड लोग होंगे वही खरीदेंगे। वाई रजिस्टर्ड ओनली? क्योंकि पक्का पता होना चाहिए कि जिससे बेच रहे हैं उससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। When they get it registered, then only they can purchase the commodities, otherwise they cannot. तो एक गारंटी हो गई कि सामान लेने देने में पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब आप वहां सामान लेकर जाएंगे तो वहां मंडी समिति के जो कर्मचारी होंगे, जिसमें ऑक्शनर होगा, ग्रेडर होगा, वो आपको बताएगा कि आपके में कितना सूखा है गेहूं, इसका कितना दाम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो निश्चित रूप से थोड़ी बेईमानी की संभावना वैसे बढ़ गई। प्लस मंडी टैक्स जो कि 6 से 9%, ये स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी नहीं है। पहली बात, देयर वाज ए कंफ्यूजन व्हिच द लास्ट स्पीकर क्रिएटेड। दिस इज नॉट एन इनकम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये उसी मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जगह है। कृपा करके घर के आसपास जाइए एंड गो टू द मंडी स्थल। वहां बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मेंटेन्ड भी नहीं है, रोड्स भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मंडी समिति है वो अपने आप में सारा काम करती है। 5 से 6% चार्ज करती है। ये 5 से 6% दे कौन रहा है? अल्टीमेटली तो किसान ही दे रहा है। द प्राइसेस कुड गो अप बाय दिस मच। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आढ़तीये हैं, अदर्स हैं, ये कल्यूजन कर सकते हैं। दे कैन कल्यूड विद द वर्कर्स ऑफ द मंडी समिति, क्योंकि वहां तो परमानेंट कर्मचारी हैं। तो वो आपका अगर गेहूं का ग्रेड मान लीजिए ए है, उसने बी दिखा दिया। इफ द प्राइसेस आर ग्रेड ए आर 1750, ग्रेड बी आर 1550, ₹2 पर केजी, माने आप समझ लीजिए 100 क्विंटल में कितना नुकसान हो गया। अब या तो वो बेचारा रिश्वत दे के उसको ग्रेड ए कराए और या कुछ और करे। तो जहां जहां इस तरह की चीजें आएंगी, जहां जहां इस तरह के इंस्पेक्टर राज आएंगे, बेईमानी की संभावनाएं तो होंगी ही। लेकिन कम से कम एक बात गारंटी थी कि प्राइस तो वापस मिलेगा ही विल गेट द प्राइस। वहां यह संभावना नहीं है कि कोई इसका पैसा लेके भाग जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन एक और गड़बड़ भी है, अगर मेरे को कहीं बाहर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आई कांट सेल, क्योंकि मुझे तो उसी मंडी में बेचना है। तो पूरे देश में, राज्यों में नहीं, बट इन पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑल्सो एक अलग अलग क्षेत्र बन गए। मंडी समिति ये, मंडी समिति ये, मंडी समिति ये, आपको तो इसी में बेचना है। और जब आपका बंधन हो जाता है तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगेन इस पर बहुत बहस हुई, कितने सालों से एपीएमसी पर बहस हो रही है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। 2015 में इनाम लाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक अगर इसको बेचें तो ज्यादा फायदा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक तो उस जमाने में 55 में सोच नहीं सकते थे। ये तो जब इंटरनेट आया देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ इट। उसके पहले तो वी कुड नॉट हैव थॉट कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये तय किया सरकार ने। ध्यान से देखिए, मैं इसका एक उदाहरण भी दे रहा हूं और ये आपके लिए बहुत दूसरी वजह से उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार ने, ऐसा नहीं कि एपीएमसी को पहले किसी ने खत्म नहीं किया, बिहार ने एपीएमसी को खत्म कर दिया था 2006 में। उन्होंने कहा हम एपीएमसी नहीं मानती, हर राज्य सरकार अपना करती थी। तो जब बिहार ने खत्म कर दिया एपीएमसी, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर एपीएमसी खत्म हो जाने के बाद व्हाट हैपेंड वाज कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आया नहीं। बिहार की मंडियों की हालत सबसे खराब है। उन्होंने इसीलिए किया था कि एपीएमसी हटा देंगे, बाहर के लोग आएंगे, खूब नए नए लोग आएंगे, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वुड कम, द न्यू वेयर हाउसेज विल बिगिन एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अनफॉर्चुनेटली पूरे देश में बिहार सबसे पीछे है। तो जो नए लॉज आए उसमें क्या है, इसमें बिहार की बात जैसी बात नहीं है। इन्होंने रिपील नहीं किया कि भाई नहीं अब एपीएमसी खत्म हो जाएगी। डोंट थिंक कि एपीएमसी को खत्म कर दिया, नो।
इन्होंने कहा चाहे एपीएमसी यानी मंडी में बेचो, चाहे मंडी के बाहर बेचो, यानी आपको ऑप्शन मिल गया। इफ यू टॉक टू इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों से बात कीजिए जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड के हैं, वो कहेंगे जितने कॉम्पिटिटर होते हैं उतना प्राइस डिस्कवरी अच्छी होती है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो बायर्स की पावर बढ़ जाती है, सेलर्स की पावर भी घट जाती है। प्रॉब्लम दूसरी है। द प्रॉब्लम वाज कि नए एपीएमसी लॉज में व्हाट दे सेड वाज कि इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो 6-7% मंडी टैक्स लगता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मंडी, वो अब नहीं लगेगा। अब ना देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर एक जगह 6% टैक्स लग रहा है और दूसरी जगह 6% टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप जानते हैं कि कहां सामान बिकेगा, क्योंकि प्राइसेस कहां ज्यादा मिलेंगे, जहां टैक्स नहीं लग रहा है। अब किसानों की समस्या ये थी कि मान लीजिए कल के दिन सब लोगों ने मंडी छोड़ के बाहर चले गए, तो अब मंडी का रखरखाव तो होगा नहीं, नो मनी इज देयर, ना वहां परमानेंट कर्मचारी रहेंगे, ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कुछ रहेगा। अब हम मंडी के बाहर आ गए। जब हम मंडी के बाहर आ गए, व्हेन वी आर सेलिंग ए कमोडिटी टू मार्केट, तो बायर और सेलर अगर अननोन है, अननोन का मतलब कौन परचेजर है, उसने आपको 50% एडवांस दे दिया, सामान खरीद ले गया, बाकी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एपीएमसी में क्या है, सारे बायर्स आर नोन, क्योंकि उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनको एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। हियर यू डोंट हैव टू। अब इसमें होलसेलर्स का लोग कहते हैं बड़ा नुकसान होगा। आई डोंट थिंक, जितने भी खरीदने वाले आएंगे वो होलसेलर के थ्रू ही आएंगे। कारण क्या है, होलसेलर्स आर नोन टू दीज फार्मर्स, इनके बीच में पिछले 60 सालों का संबंध है। 60 सालों का संबंध 1-2 दिन में खत्म नहीं हो जाता, लेकिन देयर इज ए चांस कि 3 साल 4 साल बाद अगर मान लीजिए खत्म हो जाए किसी वजह से, पुरानी मंडियां खत्म हो जाएं, नई आ जाएं, और लोगों ने खरीद के पैसा नहीं दिया किसानों को, तो डिस्प्यूट्स। और आपसे मैं फिर बता रहा हूं, भारत में मुकदमों की जो संख्या है उनकी आप अंदाज नहीं लगा सकते, मुकदमे कैसे काम करते हैं उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। हम लोग एक बड़े मशहूर मुकदमे की बात करते हैं कि हरा धनिया ये मसाला है या सब्जी, ये 13 साल केरल कोर्ट में चला और 11 साल सुप्रीम कोर्ट में चला, और ये डिसाइड नहीं हो पाया कि ये मसाला है या सब्जी, क्योंकि मसाले पर रेट ऑफ टैक्स अलग था और सब्जी पर रेट ऑफ टैक्स अलग था। अगर मुकदमे हैं तो क्या किसान लड़ पाए? दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी विश टू से। मुकदमों से बचना है, क्योंकि एक तो मुकदमे वैसे ही बहुत हैं, और जमीनों के मुकदमे तो गांव में इतने सारे हैं कि हद नहीं। शैल वी एंटर इनटू दिस। नए एपीएमसी लॉ बिल्कुल खराब नहीं है, नेचुरली यू गेट ए बेटर ऑप्शन नाउ। अगर आपका सामान बाहर ज्यादा बिक सकता है, व्हाई डोंट यू सेल इट, प्लीज गो एंड सेल। लेकिन वहां पर भी जो एपीएमसी की अच्छाइयां हैं वहां भी ले आइए, टैक्स को बराबर कर दीजिए, और जितने खरीदार हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। बाहर वाले को भी रजिस्ट्रेशन, अंदर वाले का भी रजिस्ट्रेशन, यहां पर भी टैक्स वहां पर भी टैक्स, फिर दोनों के प्राइसेस बराबर हो जाएंगे। एपीएमसी के जो प्राइसेस हैं, लेट देम बी द बेंचमार्क, इससे कम ना मिले बाहर। देखिए किसानों को फायदा होता है कि नहीं होता, बोथ द थिंग्स कैन रन, बल्कि इट विल बी ए बेटर ऑप्शन के कंपटीशन हो रहा है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। लेकिन क्या एक्चुअल होगा ये तो तब पता चलेगा जब प्लेयर्स आएंगे। देखिए अगर हजारों बिजनेस कंपनीज आ जाती हैं, एग्री बिजनेस कंपनीज जैसा कि आजकल आ रही हैं, तो हो भी सकता है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको बिहार का फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर्चून नाम की कंपनी बिहार में काम कर रही है, चावल खरीदती है, हर साल चावल जितने का होता है उस पर 50 रुपए बोनस भी देती है। पिछली साल तक 2600 रुपए पर चावल बिक रहा था, दे वर सेलिंग इट एट इट, प्लस 50% बोनस वाज आल्सो गिवन टू देम। 2650 पे हर आदमी चावल किसको दे रहा था, फॉर्चून कंपनी को दे रहा था। इस साल प्राइस 2950 हो गया। सारी फॉर्चून कंपनी के जितने भी मैनेजर हैं वो कहां हैं, उनका टेलीफोन नंबर कहां है, किसी को पता ही नहीं है। क्यों, व्हाई शुड दे बी देयर, उनको वहां रहने की जरूरत क्या है, क्योंकि दाम बढ़ा और वो भागे। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर अचानक कभी प्राइस राइज होगा
तो ये प्राइवेट पार्टी क्यों आएगी? Why shall this private party come into picture? It will not. It is not going to enter into it. तो एपीएमसी लॉज पर दोबारा सोचने की जरूरत है. एपीएमसी को we can continue with others as well. This is not a very big problem that we are going to face. अब हम लोग आते हैं तीसरे कानून में. थोड़ा कानूनों के बारे में बता इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग एक बार समझ लें कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय दिस कानून है क्या. तीसरा जो कानून है वो एपीएमसी तो मैंने अभी बताया ही. इसके बाद है एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है, दैट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव फार्मिंग, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में 1 मिनट बात करूंगा, लेकिन मैं पहले तीनों कानून बता दूं, इसके बाद ही मैं आता हूं आपके पास. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये तीसरा हमारा एपिसोड है और ये ऐसा नहीं कि कोई नया है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2002 से फर्रुखाबाद में आलू के लिए चल रहा है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चावल के लिए कम से कम 1998 से चल रहा है. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? एक बड़ी कंपनी आई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पेप्सी कोला आई. पेप्सी कोला को आलू के चिप्स बनाने हैं. व्हेन दे कम एंड दे मेक चिप्स, तो उनको अच्छी क्वालिटी का आलू चाहिए. छोटे छोटे आलू से तो उनका चिप्स बनता नहीं. तो दे विल प्रोवाइड यू ऑल इनपुट, ऑल फर्टिलाइजर, एवरीथिंग, एंड दे विल परचेज 80% ऑफ द टोटल क्रॉप विच इज गुड. जो 10-20% खराब है वो आप अपने लोकल मार्केट में बेच सकते हैं. जो छोटा हिस्सा बचा या आपके डोमेस्टिक इस्तेमाल में आ सकता है. तो दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको उन्होंने दे दिया सब सामान, सारी चीजें. उसके बाद अगर आपकी किसी वजह से फसल खराब हो गई, देन व्हाट हैपेंस? एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको उतना सामान देना है. देखिए ये हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. अगर दाम बढ़ा तो एक पार्टी भागना चाहती है, दाम घटा तो दूसरी पार्टी भागना चाहती है. सपोज द प्राइस ऑफ पोटैटो इज 10 रुपीज. एग्रीड प्राइस बिटवीन द कंपनी एंड द फार्मर इज ₹10. अगर प्राइस 8 हो गया तो कंपनी चाहेगी कि तुरंत खरीदें, फार्मर चाहेगा कि न बेचें क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है. बट इफ द प्राइस बिकम्स 15 और 14, फार्मर चाहेगा न बेचूं, मार्केट में बेचूं. वाई? उसे फायदा हो रहा है. डू यू नो कि जब भी अनइक्वल पार्टीज होंगी, कौन जीतता है? और क्या कभी किसान किसी बड़ी पार्टी के इक्वल हो सकता है? पेप्सी कोला तो बहुत बड़ी बात है. हम पार्ले एग्रो की बात करें, हम रिलायंस एग्रो की बात करें, दीज आर लार्ज कंपनीज, दे हैव ए पैनल ऑफ एडवोकेट्स विद देम. फार्मर्स के पास क्या? तो इसमें सरकार को कुछ ऐसा एश्योरेंस तो देना ही पड़ेगा कि इफ देयर इज ए केस, let the government advocates or someone else will fight free for the farmers. देखिए फार्मर्स एक ऐसी कम्युनिटी है, मानता हूं पढ़ी लिखी हो गई है, मानता हूं दे हैव नाउ ट्रैक्टर्स, मानता हूं दे आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, मानता हूं दे आर स्टडीइंग एमबीए एंड अदर थिंग्स, बट स्टिल दे नीड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसको मानना पड़ेगा कि हम अपने फार्मर्स को बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के आगे चलने की बात हम नहीं कर पाए. ये तो 3 सिंपल लॉज थे जिन पर बहस हो रही है और मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने तीनों के बारे में केवल आई एक्सप्लेन्ड व्हाट द लॉज आर एंड व्हाट हैज बीन चेंज्ड. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई खास चेंज नहीं हुआ है. अब ये बिल्कुल क्लियर लिख के आ गया है, फार्मर्स कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एग्री बिजनेस प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स, लार्ज लिस्टेटर्स, फ्यूचर फार्मिंग पीरियड्स एट प्री एग्रीड प्राइस. ये होता ही एग्रीमेंट माने ही होता है, प्री एग्रीड प्राइस, प्री एग्रीड डेट को हम अपना सामान बेचेंगे. स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए क्या है? 1.5 हेक्टेयर की जमीन है, उसका सारा आलू बिक गया, उसको कैश पैसा मिल गया, नो प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर उस दिन उस फार्म कंपनी ने नहीं उठाया या कह दिया कि क्वालिटी थोड़ी खराब है या कह दिया कि नहीं इसमें ड्राइनेस ज्यादा आ गई है, या जैसे अभी एक क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा उसने बता दिया कि आपके जो आलू है उसमें एक कोई केमिकल कांपा ब्ला आ गया है. ये कांपा ब्ला क्या है उसको मालूम है नहीं, मुझे मालूम नहीं, शायद आप लोगों को मालूम है. ये कोई ऐसा अटैक आ गया है जिसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है. डू यू नो कि पूरे इलाहाबाद में अब की बार अमरूद ही नहीं पैदा हुआ, जबकि हमारी अमरूद की पैदावार एक वर्ष में लगभग 250 करोड़ की होती है. कीड़े लग गए, नहीं हुआ. अब कहां से लाएगा जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो फार्मर उस सामान को बेचने के लिए? तो उसको
जो बार बार ये लोग कह रहे हैं वो मैं उस लेवल पर नहीं जाऊंगा। जैसे कि वो जमीन गिरवी रख लेते हैं, तो पहला नियम तो ये बनना चाहिए कि जमीन दैट शैल नॉट बी, उसको गिरवी नहीं रखा जा सकता, उसको पार्ट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाए। कैसे किया जाएगा, दैट विल बी सीन मच लेटर। ये 3 तो मैंने आपको इश्यूज बताए जिन पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जिस पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, इफ परमिट करेंगे आनंदिता जी, तो एमएसपी पर। एमएसपी पर जितनी बहस और जितनी बेईमानी बहस हो रही है, आई टेल यू दिस इज समथिंग जिस पर मुझे अगर आप 5 मिनट समय दे देंगी, तो आई होप कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन माय ओन मैनर, इफ यू Yes, परमिट sir. मी, Yes, sir. Sure, sir. क्योंकि टाइम आपका हो रहा है। नहीं सर, you can continue, sir. देखिए, एमएसपी जो है 1965 में आया था। ये एग्रीकल्चर कमीशन प्राइसेस के माध्यम से आया था, सीएफसीपी की तरफ से आया था। जरा एक बात समझिए, व्हाट वाज एमएसपी और क्यों आया। उस जमाने में जानती है भारत में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना था? 70 मिलियन टन। इसमें से 55 से 60 मिलियन टन तो किसान अपने घर में रख लेता था। 10-15 मिलियन मीट्रिक टन बेचारा बाजार में आता था। बाजार में आया और कम दाम पर बिका। सरकार चाहती थी गेहूं चावल वगैरह के दाम कम रखे जाए। वाई? सो दैट लार्ज पॉपुलेशन थी हमारी कैसी? गरीबों की। तो अगर गेहूं और चावल का और इन चीजों का दाम बढ़ा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो सरकार ने 2 तरीके निकाले। एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन इस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट सरकार कहां से लाएगी? क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए। तो सरकार ने एक बड़ा बढ़िया आइडिया निकाला, एमएसपी। यानी अगर आपका उत्पादन ज्यादा हो गया तो सब सरकार खरीद लेगी, वॉट एवर इट इज। यानी उससे नीचे प्राइस नहीं आने देंगे। एट द टाइम ऑफ सोइंग आपको पता चल गया कि गेहूं का दाम इतना है, आप गेहूं पैदा करिए। अब अगर मार्केट में सरप्लस आ गया तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस घटेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ परचेजर नोन एज गवर्नमेंट विच विल परचेज ऑल दी कमोडिटीज। अब ये जो एक्स्ट्रा गेहूं आ जाएगा, चावल हो जाएगा, इसका क्या करेंगे? पीडीएस से लोगों को बांटेंगे, गरीबी भी दूर कर लेंगे। और कभी कभी अगर सप्लाई कम हो गई तो यहां से सेल करके प्राइसेस को स्टेबलाइज कर देंगे। एमएसपी वाज ए ग्रेट ग्रैंड आइडिया ऑफ डीटीएस लाकड़वाला एंड अदर्स। इतना बड़ा आइडिया था कि इसने हमारे यहां मिरेकुलस चेंज कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन से। लेकिन जब किया ना, तब कितना अनाज होता था? 70 मिलियन टन। अब कितना अनाज होता है? 290 से 95 मिलियन मीट्रिक टन। तब हमारी इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी थी। फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे, भीख मांगते थे, फॉरेन एड लेते थे। आज हम फूड ग्रेन्स के और चीजों के नेट एक्सपोर्टर हैं। पहले 7 चीजों की एमएसपी होती थी, अब 22 चीजों की एमएसपी डिक्लेयर होती है। 22 चीजों की एमएसपी का अगर सारा सामान सरकार खरीदे तो 32 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो भारत सरकार की बजट का 1.5 गुना है। खरीद ही नहीं सकते। You simply cannot purchase all commodities in the market. क्यों नहीं सरकार बताती सबको कि ये संभव ही नहीं है, पैसा ही नहीं हम पे, हम पूरा दम, हम सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर चाहें तो भी पूरी सामान नहीं खरीद सकते। मान लीजिए खरीद लिया, फिर क्या करेंगे? हमारे पास रखने की कैपेसिटी कितनी है? 80 मिलियन मेट्रिक टन तो गेहूं चावल हम रख पाते हैं। 80 मिलियन मेट्रिक टन पैदा होता है हर साल 300 मिलियन मेट्रिक टन। अब हम उसको रखेंगे कहां? और ये जो 80 मिलियन मेट्रिक टन है वो भी कैसा है? वेयर हाउसेस हैं 60 मिलियन मेट्रिक टन के। 20 मिलियन मेट्रिक टन तो हम प्लास्टिक शीट्स में रखते हैं। ऐसा गेहूं हो जाता है हमारा कि हमने मुफ्त में दान दिया अफगानिस्तान को, उन्होंने वापस कर दिया कि ये तो चूहे भी नहीं खाएंगे, आदमी कौन खाएगा? हर साल 30 मिलियन मेट्रिक टन तो खराब हो रहा है। Where are we living? Can MSP be given to everybody? No, not at all. It cannot be given to everybody. क्यों नहीं हम लोग सारे फैक्ट्स को सब लोगों के सामने रखते? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इस समय हमारे जितने फूड स्टॉक्स हैं
माफ कीजिएगा, कोविड में इतना बांटने के बाद भी दे आर ओवरफ्लोइंग। हम पे 2016 का गेहूं रखा हुआ है, 17 का गेहूं रखा हुआ है, नीचे सारे आपको डेटा मिल जाएंगे जो मैंने दिए। 30-30 मिलियन मेट्रिक टन तक का बचा हुआ है, हम कहां ऐड करेंगे? वेयर विल कीप इट? हाउ विल वी कीप इट? उसका स्टोरेज कैसे होगा? कितना जानवर खा रहे हैं? every year the total loss is around 30 million metric ton। मैं केवल फूड ग्रेन्स की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? इसका टोटल कॉस्ट है $22 बिलियन। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कैन वी गिव एमएसपी टू एनीबॉडी? नो, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सोचिए फिर से कुछ। बार बार सरकार कह दे कि हम पूरे एमएसपी सब सामान खरीद लेंगे, तो समझ लीजिए सरकार गलत बता रही। फिर आप एमएसपी अनाउंस क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। अब सरकार ने अनाउंस कर दिया, गेहूं चावल का एमएसपी जितना बढ़ता उतना किसी का नहीं बढ़ता। एवरीबॉडी नोज, रीजंस आर देयर। सबसे ज्यादा लोग गेहूं चावल पैदा कर रहे हैं, मार्केट में अब कोर सीरियल्स तो कम पैदा हो रहे हैं। अब अगर आपने गेहूं चावल का एमएसपी घोषित कर दिया, मान लीजिए 22 रुपए, और सरकार सब खरीद नहीं सकती, प्राइवेट पार्टी नहीं खरीदती, क्या कोई ऐसा कानून है कि प्राइवेट पार्टी से कहा जाए कि नहीं आपको 22 रुपए पर खरीदना ही होगा? कैन देयर बी सच लॉ? प्राइवेट पार्टी क्यों खरीदेगी भाई? 22 रुपए में खरीदेगी? दुनिया के बाजारों में 16 रुपए में बिक रहा है। वो उसकी जगह बाहर से इंपोर्ट करेगी कि आपसे खरीदेगी? देखिए, सीएसीपी में सब चीजें लिखी हुई है। ऐसा प्राइस होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस से कॉम्पिटिटिव हो, ऐसा प्राइस होना चाहिए कि इंटर कमोडिटी वॉर ना हो। गेहूं का दाम बढ़ जाएगा तो लोग मक्का छोड़ के गेहूं बोने लगेंगे। Now these are the things that we must try to understand. I just do not know what the government is saying, what the people are saying, what the debate is about. पहले समझिए तो इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। ना तो सरकार खरीद सकती है, किसी हालत में नहीं खरीद सकती। सिर्फ 6 से 7-8% खरीदा जाता है एमएसपी पर, बाकी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता। इस समय धान की एमएसपी 1900 से ऊपर चल रही है। बिहार में धान 1100-1200 में बिक रहा है। पंजाब हरियाणा की बात छोड़ दीजिए, हम उसके बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, एमएसपी बेसिकली होना चाहिए, किसानों को मिनिमम रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन रिम्यूनरेटिव प्राइस देगा कौन? कंज्यूमर देगा ना। आप दाम बढ़ते ही तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। द कंज्यूमर डजंट वांट टू पे, द प्राइवेट पार्टीज विल नॉट एंटर। फिर आपको सोचना पड़ेगा, एमएसपी केवल उनको दिया जाए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वीकर सेक्शन है, जिनके लिए अभी ममगैन साहब बता रहे थे, जिनकी टोटल जो एवरेज क्या कहते हैं साइज ऑफ द फील्ड है, अगर वो 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक की है तो उससे उसका सब सामान खरीदा जाए। लार्ज वालों का कैसे खरीद सकते हैं? आप किसको देते हैं सब्सिडी? गरीबों को देते हैं कि सबको सब्सिडी देते हैं? यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एमएसपी वाला जो बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं इस पर भी ज्यादा फिर से दोबारा बात कर लूंगा। लेकिन लेट मी टॉक अबाउट समथिंग मोर। एमएसपी के बाद एमएसपी को नापने का तरीका देख लीजिए, पहले कैसे था, अब वो भी आगे चला गया। एमएसपी के बाद इसको जब सोचा गया था तब क्या हालत हुई थी, मैंने लिख के भी दे दिया ये सारी चीजें, ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे आई एम स्पीकिंग मोर इन हिंदी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस व्हिच आई वांट एक्चुअली टू टॉक टू स्टूडेंट्स मोर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1980 से जब से फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, टोटल आज तक हम क्यों नहीं बना पाए अपनी सेविंग कैपेसिटी या वेयर हाउसेस? हमारी वेयर हाउसेस की हालत इतनी खराब क्यों है? 80 से 82 मीट्रिक टन क्यों? अगर हमारे पास अगर ज्यादा अनाज पैदा हो जाए तो हम क्या करेंगे? कितना वेस्ट होने देंगे? और प्लस हमने WTO से एग्रीमेंट कर रखा है, वी कैन नॉट हैव मोर देन a total amount of food grains again। हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, that also cannot be done। तो फ्रेंड्स, ये चीजें एक तो देखिए, हम लोग हर चीजों में एक्सट्रीम की बात करते हैं। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? साहब प्राइस स्प्रेड इतना ज्यादा है कि 2 केला 5 स्टार होटल में 2400 का मिलता है।
अरे भैया वहां देने वाले अलग हैं, 2400 में दें, 4800 में दें, इज इट कंपेरेबल? दूसरी तरफ बताएंगे साहब किसानों को इतना मिलता है, हमारी एक तरफ के आदमी बताएंगे इतनी आत्महत्याएं किसानों ने कर ली, उन्होंने क्यों की हैं, कैसे की हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो मार्जिनल किसान है कि लार्ज किसान है, इन पर रिसर्चेस हो रही हैं क्या? देखिए अगर एग्री बिजनेस को बढ़ना है, और मैं फिर से कहता हूं कि भारत में सबसे ग्रोइंग बिजनेस एग्री बिजनेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो एक हमको एक माफ कीजिएगा, एक जिसे कहते हैं कोऑपरेशन की ज्यादा जरूरत है। वी नीड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारा स्टेट सेंटर सब लोगों को मिलजुल कर कुछ काम करना चाहिए। यहां ऐसी डिबेटेबल सिचुएशन ना क्रिएट कर दीजिए कि आइदर वी आर ऑन दिस साइड और वी आर ऑन दिस साइड। ये जो हमारे आपस में फेडरलिज्म जो बिल्कुल लड़ाई की सी स्थिति में है कि एक राज्य सरकार ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, दूसरे ने कहा ये बिल्कुल गलत, इतने लेवल पर मत जाइए। लेट्स ट्राई टू हैव ए मिड पाथ। अब हम ये भी पक्का मान सकते हैं कि सरकार सारा काम नहीं कर सकती। द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंज्यूम, द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। वी नीड मोर एंड मोर एंड मोर पीपल, राइट? तो हमको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जहां सरकार का रेगुलेशन तो मजबूत हो लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो। ये लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनी, इसको तुरंत चेंज करके दूसरी ले आओ। ई नैम आया 2015 में, 2020 में ये ले आओ। अब इस पर अड़ जाइए कि नहीं साहब हम तो इसे चेंज नहीं करेंगे। नहीं, वी शुड थिंक एंड डू इट। जैसे उदाहरण के लिए क्यों हम चावल पंजाब में पैदा करें? वहां वाटर टेबल इतना नीचे क्यों है? इसलिए कि वहां चावल पैदा कर रहे हैं, जबकि वहां चावल की जगह ही नहीं है। चावल होना चाहिए पैदा बंगाल में कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से, जहां पानी ज्यादा बरसता है, बिहार में, उड़ीसा में। व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग राइस देयर? ये इसलिए क्योंकि चावल की एमएसपी ज्यादा है और वहां सरकार जो है, राज्य सरकार एमएसपी ज्यादा देती है, इसलिए वहां खरीदारी ज्यादा होती है। तो क्या हमारे पास कोई नेशनल वाटर पॉलिसी है? क्या हमारे पास कोई नेशनल अदर तरह की पॉलिसीज हैं? Why can't we have a 2-3 year period of peace and harmony? सारी पॉलिसीज को रिसर्च के ऊपर आधारित करके अगर हम चेंज करेंगे तो सबका फायदा होगा। ये जो एडहॉक पॉलिसीज हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म माने आप 18 दोगे मैं 22 दूंगा, आप 2 रुपए में आटा दोगे मैं 1 ही रुपए में आटा दूंगा, ये चल सकता है क्या? ये तो फिस्कल एक तरीके से आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपसे हम टैक्स लेंगे ही नहीं और सारा बेनिफिट देते रहेंगे। ऐसे कहीं कोई सरकारें चलती हैं? द गवर्नमेंट हैव टू रन इन डिफरेंट मैनर। तो वी हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन। I think I have been speaking a lot. I should stop because otherwise no people will be left with me. I think let me stop now. Thank you, gentlemen, for listening, ladies for listening. I spoke too much, probably. Sorry for the delay. Thank you so much, sir. There is one question from participants. वीडियो स्क्रीन है तुम्हारा ऑन? अभी हमको जब बोलेंगे तो Monali, she has asked, in case why can't the PDS be improved to accommodate all those who are not? The fact is not hidden that barely people benefit from PDS, as in the real beneficiaries. Am I audible, sir? You are very much audible. Yes, sir. And she and you and we Yes, sir. know these answers. Let me not say these things. In Kanpur district, there were total number of residents were 22 lakhs and the ration cards were 43 lakhs. Why shall we speak on these things? जिस जगह की आबादी 22 लाख हो और राशन कार्ड 43 लाख हो, उसके बारे में हम लोग एक्चुअली वी आर लाफिंग ऑन आवरसेल्व्स। हम अपने ऊपर हंसते हैं। क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट? देखिए, अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, जब से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग कैन हैपन, मॉनिटरिंग कैन इंप्रूव। मैं बार बार कहता हूं, वी हैव टू ब्रिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव दीज थिंग्स। अब एडमिशन में नाम लेनी होती, कंप्यूटर बिल्कुल नंबर देता है।
अब अकाउंट्स में धांधली नहीं होती, सीधे खाते में जाता है किसान के पैसा। दीज थिंग्स विल इम्प्रूव। हमको, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम बनाने से ज्यादा अगर हम मॉनिटरिंग पर ज्यादा ध्यान देते, इट कुड हैव डन वंडर्स। ऐसा नहीं है कि भारत इस समय जितना भारत में अनाज है, माफ कीजिएगा, हम पूरे 2 साल तक 3 साल तक बिना अनाज पैदा किए भारतवासियों को खाना खिला सकते हैं। इतना अनाज है हमारे पास। Yes. That's not the problem. The problem is how to implement. देखिए, मैं कई बार इस इश्यू पर आना नहीं चाहता। हर सरकार का काम ही होता है सरकार में बने रहना। वो अच्छी पॉलिसी बनाती है, दैट पार्ट इज ट्रू। लेकिन उस पॉलिसी को बनाने के साथ इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इन पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम अनपॉपुलर हो जाते हैं। बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं किसी सरकार की तारीफ बुराई नहीं करता, बिकॉज मेरे से उससे मतलब नहीं। मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं सारी बातें आपके सामने प्लेनली रख देता हूं। देयर आर प्रॉब्लम्स बट दे कैन बी डन। कई बार इंप्रूवमेंट हो चुका, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम आ चुका, लक्षित कितनी चीजें हो चुकी हैं। राशन कार्ड बोगस खत्म किए गए, फिर वही कितने लोग राशन कार्ड से अब सामान लेते हैं, मेनी पीपल डू नॉट। अब अंत्योदय आ गया, अंत्योदय से 2 रुपए में, 3 रुपए में, 5 रुपए में आप दीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज वी डोंट से डोंट गिव इट टू देम फ्री अगर आप पे बहुत ज्यादा है। बट द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी तो देखना ही पड़ेगा, सरकार कितना कर पाएगी। एक्चुअली डोंट अलाउ मी टू एंटर इनटू अदर थिंग्स। मैं भाग जाता हूँ। आई एम सॉरी। बिटिया रानी से कहिए कि हम लोग अलग से कभी बात कर लेंगे। Sure, sir. Sir, one of the participant has a question from Mamgen, sir. Professor Mamgen, are you there, sir? Professor Mamgen, sir? Stop screen. I think sir is not there. So once again, thank you so much, sir. You have rightly said that it is very difficult to predict. Yes, sir. Mamgen sir is there. Yeah, Mamgen, what is the sir? question? Yeah. One of the participant, Parul Arma, she has raised the question, when we have different kind of farm size as well as the farmers, such as marginal, small, medium and large, then why the same type of farm bill is going to be implemented for all the farmers? That's, I think, Professor has already replied this question to her. Basically, I think there should be differentiation in the farm laws and policies also. So basic focus should be how to protect the interest of small farmers. Basically, I'm talking small farmers and those marginal farmers and those who are sub-marginal farmers. Within the marginal also, there are some marginal farmers. 50% of the farm sizes are less than what I call 0.31 hectare. So that is the farm size. So huge chunk of population. So if you talk of policy, some kind of progressive policy for them, that exclusively will be procuring from you, exclusively will be purchasing from you, exclusively will be safeguarding your interest under these laws. If somebody is cheating you, will be fighting your cases. So if these kind of things can be made for a select group of farmers, I think definitely it will be work. But in current form, these bills are not progressive. Not progressive. I hope I cleared the answer. Thank you so much, sir. I think she is satisfied with the answer. I would like to express my thanks to Professor Manmohan Krishna, sir. It is very difficult to predict whether these new bills are good or bad, because these are favorable for some people and against for some people. And as far as MSP is concerned, MSP should be given to only marginalized farmers, not to all those who are having large farm sizes. So once again, thank you so much, sir. Now we have reached to the end part of this webinar. So it's time to say thank you to all those who have directly and indirectly contributed to make this webinar a great success. So I would like to invite Dr. Manju Banik, Associate Professor, Department of Economics, Arya Mahila PG College, to propose formal vote of thanks. Thank you, Anpurna. Thank you. Good evening, everyone. Thank you for joining National Webinar on Agriculture Crisis and Farm Bills 2020.
It is my privilege to express the vote of thanks. First of all, I would like to express my sincere thanks to Professor Rajendra Prasad Memgan, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad. Sir, we are thankful to you for accepting our invitation in such short notice, and you have kindly found out time from your extremely busy schedule to participate in the webinar as chief guest. Thank you so much, sir. I would like to thank Professor Manmohan Krishna, Department of Economics, University of Allahabad. Thank you, sir, for enlightening us through your informative lecture about agriculture crisis and Farm Bill 2020. In this webinar, we could learn about the future plan of Government of India for farmers' welfare. Sir, once again, I thank you. I express my sincere thanks and gratitude to our respected manager of the college, Dr. Shashikant Dikshit ji. This webinar would not have been possible to organize without your support. Sir, we are thankful to you for your encouragement and blessing. My heartiest thanks to our college principal, Professor Rachna Dubey, for her guidance and providing infrastructure facilities of the college for organizing this webinar. Madam, we are grateful and thankful to you. Thank you so much. And thanks to Dr. Shashi Bala Srivastava, Dr. Namita Gupta, Dr. G.K. Sinha, Mr. Pradeep Singh, and Mr. Kuldeep Sharma. Thank you to all the participants and student delegates for participation in webinar. Thank you. Thank you to Dr. Anpurna for organizing and conducting this webinar gracefully. Once again, thank you to all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I regret to inform you all that this webinar was to be presided over by Professor Prashant Ghosh, Head Department of Economics, University of Allahabad. But as he lost his mother yesterday, so he couldn't join us. So we pray that the divine soul rest in peace. And we express our condolence for his whole family, entire family. Thank you, one and all, for joining this webinar. Thank you.